एग्जीक्यूटिव दिया है 66 जगह देना मेसेज व्हाट्सएप में सेटा कवर कर दबो 5-7 मिनट लगे पढ़ दबो साथ साथ हे जीवो और बुक दियो जेटा रही गेले रही जीवो व्हाट्सएप रे सेंड हेतिला बा 66 ना केते जायतिला 66 ने थिबो ता हेतिला 52 रो हां 52 रो 66 ने देखि दलो 5 मिनिट रे हे जाउची केते मन लो देखिबा रही गेली सेंति रही जो व्हाट्सएप गुटे ही गुडा व्हाट्सएप पर जदी कॉपी की टिपी देलो सेटा ठीक अधिकांश पिला व्हाट्सएप रो कॉपी की टिप करदे après você construction après construction बड़ा पटरे को आर्टिकल 52 President of India. there shall be a president आर्टिकल 52 नहीं 52 हला भारत वर्ष रे जने राष्ट्रपति रहबो आर्टिकल 52 Executive power of the union. एटा म 52 रिपीट करछि 52 तापर लेख तापर हमर देछि आर्टिकल 53 53 कोन कहले एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन हला आर्टिकल 53 आर्टिकल 52 कोन देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 53 एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन थर्ड 54 election of the president of India Ditya election of the president of India 54 election of the president of India Rahul 52 there shall be a president of India 53 executive power of the union 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 next article 54 Election of president. election of the president article 54 article 54 election of the president of India then article 55 The manner of the election of President. repeat Monisha Manner of election of president. president. manner of the Of election of the president. president manner of the election of the president file 55 manner of the president of Election. manner of Manner a of presidential election manner of presidential election है article 55 article 55 है manner of a presidential election or election of the president of India article 55 article 54 Election of Election of president. article 53 Executive power of the union. executive power of the union अच्छा article 52 President of India. next आसीगला article 56 Term term of the president of India article 56 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 term of the president of India article 57 eligibility of the re-election. eligibility of Re-election. re-election eligibility of a re-election for the president of India eligibility of a re-election eligibility of a re-election for the president of India eligibility of a re-election for the president of India eligibility for re-election for the president of India article 57 article 58 qualification for election as president. qualification for election As president. as president president हबा पई कोन कोन हमर क्वालिफिकेशन बा योग्यता सेटा हला आर्टिकल 58 qualification 58 qualification 57 eligibility
शॉर्टकट रे माने के चेष्टा करो 57 एलिजिबिलिटी अच्छा 56 Term of office of president. 56 है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट अच्छा 55 मैनर ऑफ इलेक्शन अच्छा नेक्स्ट टाइम में जीवा 59 Condition Conditions of president office. conditions of a president's office it is 59 conditions of the president office conditions of the president's office article 59 conditions for the president's office article 60 oath or affirmation. oath taking or oath or affirmation और जो शपथ पाठ करते प्रेसिडेंट सेटा आर्टिकल 60 आर्टिकल 60 oath or affirmation of the president of India article 60 oath or affirmation of the president article 61 impeachment article 61 impeachment article 61 impeachment article 60 is coming oath and affirmation article 60 oath and affirmation article 60 है ना article 60 oath and affirmation article 60 आंसर केतरा बेले एग्जाम होची कि 11 रा छै सेटमेंट वोट केला स्टेटमेंट केते मार्क रो 30 तो पालो छै एग्जाम बेस्ट ऑफ लक आज एग्जाम मध्ये किती करा नाही होते देखा पिले आर्टिकल 60 oath and affirmation article 61 impeachment article 61 impeachment रख में कौन था ना रखा था निखिल कौन आर्टिकल 61 impeachment article 62 time of holding election time of holding election article 62 article 62 time of holding election article 62 time of holding election article 62 time of holding election नहीं 5 वर्ष नहीं जेते टर्म टा एंडिंग होबा को जाउथिबो हला कि लास्ट नहीं तार गोटा थाए हमर प्रेसिडेंट कर जो डेट अछि त डेट पूर्व जेमे दिले कोन करबो रिपोर्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट जेपन त कंप्लीट न होई छै सेपन से कोन करबे टर्म को आसले एक्टिंग रे रहिबे 30% अच्छा तापर आर्टिकल 63 the vice president of India vice president article 63 मतलब article 52 there shall be a president article 63 vice president of India there shall be a vice president article 63 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 vice president अच्छा article 64 the vice president will be ex officio chairman of Rajya Sabha of the state council of state means Rajya Sabha हमरो vice president ex officio chairman एटा किते आर्टिकल रे अछि 64 already empower करछन article 64 to the vice president of India to act as the ex officio chairman. Ex officio means by virtue of his power. Ex officio means by virtue of his power or one's power. That is article 64. Article 65. Article 65 हुआ. the vice president will act as president जेते बेले president का office vacant रहिला vice president सेठी कोन करिवे president को role निखिल performance करिवे सेटा article 65. Very good, Nikhil. Where is Lambodar? Sir, it is due to the Union Parliament, right? The Vice President of India is the ex-office chairman of the Rajya Sabha. It is which article? सेठी कोन से आर्टिकल मेंशन करियो एटा सब क्लास 3 पीजी लेवल आर्टिकल मेंशन एटा तमे कोन की कॉम्पिटिटिव लाइन ऊपर जे पढिबो दाकू क्लास 3 पीजी रे पढिबो सेतबळु काहे की पढिबो एबे के न पढिबो तमे छोटा बळु कोणी के गुस्तलो टेबल आ एबे गुसी भीतर फरक नाही जे छोटा बळु केते एक्सपर्ट हेथिबो एबे तमे असुविधा रे पडला बोली कोणी के गुसबो कि टेंस कर जिवो समय होता है तेणु आमर एठी कोन रे छि ओडिसा रे जो काउंसिल को छपई छन
बुक रे आर्टिकल मेंशन करना तमे जदी आउट ऑफ स्टेट तो कौन सी बुक देखिबो पब्लिशर मानकर सब गुडा सेति नै से पिला माने कॉम्पिटिटिव कौन पे कहूँ आर्टिकल के जिते पॉलिटिकल साइंस पढ़ल माने आर्टिकल अमेंडमेंट शेड्यूल ये गुडा को मुहरे रख देन देयर ए को नै कि साइंस पिला केते पाठ पढुची तुम आर्ट्स पाठ हमें केटा जानि परिमे दे आर्टिकल को रेगुलरली पढिबो जेतिके रहउची 8टा 10टा हो तापरे मु तुमको कहिची रेगुलरली प्राइम मिनिस्टर तीन तीनटा मन रख हमर 15 जण तीन तीनटा मन रखले 5 दिन रे हमर सर जीवो प्रेसिडेंट मध्ये सेही भली तीन तीनटा मन रख वाइस प्रेसिडेंट तीन तीनटा मन रख एटा सब कोन की गोटे गोटे मार्कर आजिकल लाइफ टा कोन होची ना इनसिक्योर होची सिविल ठार आरंभ करे जते कॉम्पिटिटिव रे डेसिमल रे मध्ये पिला को तो हमें आर्ट्स लाइन गले भी एट है समथिंग डिफरेंट होबा ना तमे रेवेन्सा कॉलेज रे 500 600 पिलांग भीतर जे एक नंबर हेलो देन ऑल ओडिसा रे एक नंबर हे भेरी लर्निंग टू इंडिया रे जे एक नंबर हेलो दिने भी रेवेन्सा रे एक नंबर हे तो सेटा निजे को फोन करता निजर इंटेलिजेंस निजर स्पिरिट रहइबा दरकार सब मटेरियल बहि अछि ताको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर हां आर्टिकल 65 65 the vice president to ask हमर जतले president. प्रेसिडेंट कर ऑफिस वैकेंट रही छी सेतबेले वाइस प्रेसिडेंट कोन करबे तंकर परफॉर्मेंस करबे ड्यूटी हैला निखिल तापरे 66 election of vice president. लास्ट में हमें जो देइथिले एग्जीक्यूटिव रो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 अच्छा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हां आर्टिकल 54 अच्छा कहले देखिबा वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान कौन करचंती एक्ट as the ex officio chairman of राज्य सभा by which article 64 है ना there shall be a vice president of india भारत वर्ष रे जने वाइस प्रेसिडेंट रहबे आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 there shall be a president in india 52 रिपब्लिकन कैरेक्टर को निखिल हम एठी बंचै कि रखले हैला निखिल को कॉलेज पढ़तो कोट आश्चर्य मंगरटा केउजे which place that is श्रीचंदनपुर स्कूल साइड है वो जगह को ना धानगर नदी बोल गांव पंचायत से हां कौन कौन सब्जेक्ट रखी छ पॉलिटिकल साइंस लॉजिक साइकोलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट है जो पाठ पढ़ा होची बुझी परछ तठी हां जोटा बुझी न बुझी पे स्ट्रेट पचाइबो ना अच्छा पिले एबे मन रख आमे लॉन्च करिबा चैप्टर डिस्कशन को चैप्टर को पढिबा अब लास्ट को थिबो 5 मिनिट मध्ये मन पके देबो 5 जण प्रेसिडेंट 5 जण प्राइम मिनिस्टर बना एना जेमति डिस्कशन करले से डिस्कशन एटा होची बाबा आमे एतले पाठ पढि जे ट्यूशन और कास्ट किछ एक्स्ट्रा जानिला मन हबन अब दियो बुक दियो शीघ्र एग्जीक्यूटिव देखो लिसन आमे को जे चैप्टर पढिले काली कोट गयो हां बोथ में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सी ताको ओतटे की करन ये भी ताको ओतटे की करन दी जण ताको वाइस बापा रे ए जो मते टिके कहि देला हमरा प्रेसिडेंट रो को एग्जीक्यूटिव रो को जगह जाइतिला फाइनेंशियल सर जाइतिला अच्छा जुडिशियल पावर फाइनेंशियल पर कंप्लीट ही जाइतिला Listen students, financial करे होचे control over the executive. सर इमरजेंसी पावर पढ़ा हबो Emergency power of the President of India 184 184 new book रे particularly आमे जदी कहिबा सुप्रीम कोर्ट रे प्राइम मिनिस्टर कोन सॉरी प्रेसिडेंट कोन कोन रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर रे जदी हमें देखिबा
ताले टिके जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को डिस्कशन कर दउची जुडिशियल पावर जो रहउची दैट इज रिलेटिंग टू 143 हमें टिके खाली पढ़ी दउची तापर पर हमें जेबा इमरजेंसी प्रोविजन 143 सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइस के देता रिलीज से गोटा तो देइची तो बाउंड होना नहीं पाउंड नहीं स्टिल देन प्रोविजन इज देयर प्रोविजन अछि बाउंड नहीं किंतु जते बेले एटा रहिछि इन द सेंस आमे मोस्ट ऑफ द टाइम आमे कहिबा आजि क्लास टा रहिछि तमर 9टा बेले पॉलिटिकल तमे जेहेतु रजिस्ट्रेशन करिछ सेटा कोन तम बाउंड नहीं जे कुला न होछ ना हम कोन किछि रेजिस्ट्रेशन करछे करूना किंतु आसीबाटा बाउंड एनीवे क्लास टा अटेंड करिया ओके स्टूडेंट्स as head of the state the president has the power to grant pardon reprieve respite subsession suspension or remission punishment of any criminal जे कौन सी क्रिमिनल को जो पनिशमेंट दिया जाउची ता जगह रे दरकार पड़ले प्रेसिडेंट कोन करे राज क्षमा देई परिबे जे किछि भूल भटका करछि ताको रिलीज करे दो से मते प्रेसिडेंट पर पावर अछि कि से भली प्रकार ए सुधा प्रोविजन घटेनी भारत वर्ष जे गोटे कल्प्रिट अछि दोष त्रुटि करछि ताको पनिशमेंट दिया जिबाटा कंपलसरी he or she may or may not be punishable so far as the verdict of the president of India is concerned प्रेसिडेंट चाहिले पनिशमेंट देई परिबे पनिशमेंट देई परिबे सेट हो जे पार्डन बा राज्य क्षमा जो दिया जाय किंतु बहुत समय देखा जायछि एबे सुधा भी मतलब प्रेसिडेंट का को सेंति रिलीज करनांती जो माने हेनस क्रिमिनल होछन देखो तो दिया है जे प्रेसिडेंट रिलीज कर दे पाइबे को प्रोटोकॉल से रिलीज करता सेही तो एबे भी सुधा कौन सी समिति आसेनी हमर केस स्टडी रे एबे भी सुधा गोटे को जगह रे प्रेसिडेंट को रिलीज करिना मु उदाहरण स्वरूप कहि हमर विशेष करी कसब हत्याकांड त्यागला जो करथिला अटैक कोटी ना होटल ओबराई नरिमन हाउस एगुडा जो सब ताज होटल ऊपर तापर से कोन कला लास्ट स्टेज रे प्रेसिडेंट पर ना चाहिला टिके क्षमा राज मानवा पय सेठी कोन तो अप्रूव करे कि करहला जरा जो आमे कहबा केमके गांधी कोन कला शूट कला के ना से यदि अपील करिवे जे प्रकृति रे मते रिलीज जे सेठी कोन प्रेसिडेंट ताको नेशनल इंटरेस्ट रे केबे कोन देई परिबे तम से कोई कोन सी प्रोटोकॉल बा कोन सी समिति केस स्टडी नाही जो जगह रे जे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देला पर ताको रिलीज करे देबे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट कमते भी एमिति जाई दे लोक को रिलीज दियंते जो माने देखिबो भयंकर गोटे स्टेप नउचंती विशेष करी रेप केस जेम गोटे कलकत्ता रे गोटे डॉक्टर केस घटला लेडीज से जगह से मन को रिलीज दिया जीवो के तुम रिलीज यदि से मन को मिले विशेष करी पाइबा सर हमें देखिबा पले in considering all mercy petitions the president depends upon his own discretion and in accordance with some accepted norms एवं देखा जीव को जगह सेमिति किछि नॉर्म्स जो अछि कि किछि प्रोविजन रही छि कि जो जगह रे कोन करिवे से तो रिलीज करे दे परिबे further the president can seek the advice of the supreme court of India over any legal matter or a bill of public importance जते बेले सुप्रीम कोर्ट कोन से परफॉर्मेंस करूचंती दैट इज लॉ अनुଯାयी सब गुडा सुप्रीम कोर्ट परफॉर्मेंस करछन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तंग मन इच्छा तंग घर कथा इटाने से जोठ ही करबे लॉ अनुଯାयी प्रेसिडेंट जते बेले रहिले प्रेसिडेंट को स्वतंत्र गाइडलाइन दिया जाई से ता बाहर को जाई अनुଯାयी काम करि परबेनी कहना तमे देखिला आर्टिकल 61 रे इम्पीचमेंट अछि प्रेसिडेंट मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करिके रूल फ्रेम करि जे भी रहिबे आमे भी एठी रहि छै किछि रूल और रेगुलेशन भीतर रहि कुह लॉ गाइड्स द वर्ल्ड विश्व को शासन करू जे आईन तो आईन विरुद्ध रे केइन जे से भले किछि गोटे हेनस क्राइम करबो भयंकर क्षति करबो नेशनल इंटरेस्ट ऊपर किबा कोनसी पब्लिक प्रॉपर्टी ऊपर किबा गोटे लोकर लाइफ आ हमर लाइफ लिबर्टी ऊपर ता अगेंस्ट रे कोनसी प्रकार डिसीजन जे तोले नउचंदी प्रेसिडेंट दैट इज आल्सो एडजुडिकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एमिति कोनसी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नेबेनी जे ताको माने प्रेसिडेंट कोन करिवे ना नुल एंड वॉइड डिक्लेयर करबे तनु सब बेले कंसल्टेशन रही छि जोटा आर्टिकल 143 रही छि ना से 43 अनि जाई जते बेले दरकार पड़ले प्रेसिडेंट मध्ये नउचंदी एडवाइस कारण सुप्रीम कोर्ट पर एवं सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस मध्ये कोनसी दरकार पड़िले भी मध्ये प्रेसिडेंट रो सहित गोटे ऑनररी कंसल्ट करि पारे जोटा को हमें विशेष करी अधिकांश देखिबो प्रधानमंत्री मध्ये जाउचंदी सौजन्यमूलक साक्षात हमें जोटा कहउछ जेंकि खान से तो प्रेसिडेंट भेट करूचंदी डिस्कशन करूचंदी रिलेटेड टू कोनसी इश्यू further the president can seek the advice of the supreme court of India over any legal matter or a bill or public importance the supreme court is bound to give such an advice under article 143 however the president is not bound to accept the advice given by the supreme
एटा आर्टिकल में मेंशन करि देले किंतु एठी कहउचंदी जे प्रेसिडेंट बाउंड नु प्रेसिडेंट जदि बाउंड नु त सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कोन पई तेनु प्रेसिडेंट आउ सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन मोस्ट एक्सटेंट रे किछि हाय कम्युनिकेशन तंक भीतर रहे कौन से प्रकार एडजॉइनिंग इश्यूज रहे जो इश्यू अनुଯାयୀ परस्पर जो डिसीजन देबे सेटा मतलब कोन करिवो हमर प्रॉपर आउ कॉन्स्टिट्यूशनल हे पे तापर पिला आसिला हमर इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पर जेते वाइटल पावर रहिछि इमरजेंसी प्रोविजन रहउछि गोटे मु कहबि सुपर मोस्ट पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स सम प्रोविजंस फॉर डीलिंग विथ इमरजेंसीज जेते पिले जरूरी कालीन परिस्थिति आसी पहुंचला देखो it gives to the president some powers to deal with the three types of emergencies तीनटा emergencies तीनटा emergency बाबत डिस्कशन करि chanti हला कि निखिल फर्स्ट हला नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 मनैला दिव्य नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 अच्छा caused by war or threat of war or external aggression or internal armed rebellion देखो पहिले जेते बेले धरा जो war like situation हबो इंडिया चाइना war हे गेला इंडिया पाकिस्तान war हे गेला इंडिया बांग्लादेश war हे गेला से समय रे कोन हबो ना जदि हमें चाहिबा पर्टिकुलरली तुमे भाबी नियो जेते बेले war हैला अधिक एक्सपेंस जीवो को क्षेत्र रे डिफेंस क्षेत्र रे मनु जना नै निकल जेते डिफेंस रे हमें कोन करले विभिन्न प्रकार वेपनरी किनिले आर्म्स और एमुनिशंस किनिले सेते से बाबद रे अधिक हम एक्सपेंस कले त ऑटोमेटिकली हमर जो रहिछि एसेंशियल कमोडिटीज रो रेट बढ़ी जीवो बढ़िबनी बढ़िला परे आउ सबुठरो बड़ जिंस होछि देश भितर वर्तमान कोन हबो ना देश बाहर जेमति लॉ एंड ऑर्डर रो परिस्थिति खराब सेमति बॉर्डर रे कोन रहबे आर्मी फोर्सेस माने फाइट रहबे आ हमर जेतिके जंक तीनटा रहिला कमांडिंग फोर्सेस एयर को नेवी को हमर सॉइल को लैंड रो को जो माने रहिले विशेष करी जनरल होंतु एडमिरल होंतु किबा हमर एयर मार्शल होंतु ये माने कोन करिवे टोटली अलर्ट होई के रहिबे प्रेसिडेंट हबे हमर सुप्रीम कमांडर से समय रे कोन हबो इमरजेंसी डिक्लेयर करा जिवो आ प्रत्येक प्रोडक्ट गुडा का राशन होई जिवो राशन इन द सेंस हमर जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जति कि जेमति वर्तमान सब राशन अंडर बा पीडीएस अंडर रे पाउचंती लोक माने सब कोन चाहुल हमें जो सब रहिछि गुडा सब एसेंशियल कमोडिटीज किछरा रे तीन चारटा जिंस कोन होउछि बोते दिया जाउछि से गुडा का सब कोन हबा राशन होई जिवो लोक मान को पर्टिकुलरली पर हेड सिस्टम रा एवं से समय जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन करा गला से पावर टा हला कारण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो एवं अंडर आर्टिकल 352 तमे खाली एति कि मन रखो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 देन आसी गला पिले हमर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट और स्टेट्स अंडर आर्टिकल 356 जोटा को हमें प्रेसिडेंट रूल बोली कहू कौन सी स्टेट रो जते बडे लॉ एंड ऑर्डर कोन हला ना वायलेटेड हे गला मो उदाहरण स्वरूप बोली कहबी ओडिसा रे वर्तमान कोन हबो ना हिंदू मुस्लिम भीतर गोटा राइट हे जो कुछ गोटा दंगा लागि बहुत सारा ओडिसा ताकू कोन करिबे ना स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करि परिबे जते बेले कोन करिबे प्रेसिडेंट इम्पोज करिबे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल जते बेले हे जिवो हम स्टेट रे टोटली पोलिस स्टेट हे जिवो पोलिस स्टेट इन दिस सेंस जेमति कोरोना बेले कोविड 19 बेले माटो हे लोक को कंट्रोल कर रखितिले सेंति पुलिस माने टोटली रिस्पांसिबिलिटी नेबे डील करिबे हाउ टू एक्चुअली make the people rationalize लोक मानु केमिति कंट्रोल करिवे से बदले कोन करिवे स्टेप नेबे and that is under article 356 then students financial emergency under article 360 that's emerging arising out of the financial crisis of the country जेते बेले गोटे कंट्री रे फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ी जीवो लोक मानक पाखरे टंका नथिबो किंतु प्रत्येक प्रोडक्ट बा एसेंशियल कमोडिटीज रे रेट बढ़ी जीवो आमे जेतले कहिबा धर जो एमिति गोटे स्कार्सिटी से पहुंचीबो लोक मानक पाखरे फाइनेंशियल एसेट्स असुविधा रहउची आ प्लस हमर जो एसेंशियल कमोडिटी जेगुडा हम ठीक टाइम रे पाई पारुना तन करी दैट इज प्राइस हाइक टंका माने जिनिस पत्र रो दाम मूल्य वृद्धि वृद्धि चलिला यदि प्रत्येक प्रोडक्ट गुडा मिनिमम 300 400 टंका हे जो लोक कोन खाइ गिरी बंची परिबे केमिति लोक मान बंचिबे तमे को गोटे प्राइवेट सेक्टर रे आजिकली नॉर्मल लोक माने जे जॉब सेक्टर रे जॉइन कलाउ 6-7 हजार टंका रे रहउछ 6-7 हजार टंका रे कि हाउस रेंट देबे
हाउस रेंट देला पर तांको खाइबा खर्च जदि से माने खाइबारे मु गोटे फैमिली रे कहबी बापा मां पुओ झियो अछंती 4 जण तांकर जदि मिनिमम एक्सपेंस होची डेली जीव केते 200 टका खाइबारे जीव ताले मासु केते गला 6000 6000 ना नहीं 30 दिन 6000 जदि जण लोक 6000 टका दरमा बोथि से केमि घर भड़ा देबे केमि रहइबो केवल जनक कथा मु कहूनी जदि समस्त एक्चुअली जोटा हेतला सिचुएशन श्रीलंका रे जोटे सिचुएशन हेतला माने कोठी ना पाकिस्तान रे इतने टमाटो किलो हेतला 400 टका तेणु से लोक मैंने कौन किଣିବେ कौन खाइबे कौन जमीती हम लास्ट को लोक मैंने कौन गोटे टमाटो को छुरी रे काटिक फाड़े नहीं किए काकुड़ी रेट बढ़ियो टिके ना काकुड़ी काटिक आनी आ एक्सचेंज सारी जो गोटे गोटे केजी हो 400 टका लोक तो देबेनी इनक्लूडिंग हमर ओनियन तेणु आम देखा पर्टिकुलाली जिते आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी आसो से कौन करवा वी मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन आवर फाइनेंशियल एबिलिटी जिते आम फाइनेंशियली कौन क्षेत्र में मैनेज करें आम कौन कर लैक करवा प्रोफेशनालिटी की इम्पोज करेंगे प्रेसिडेंट फॉर आर्टिकल 360 so students in respect of these three types of emergencies the president has given the power to proclaim emergency and to take appropriate steps for meeting the emergency these are called emergency powers of the president जेतेबेले देखिबे प्रेसिडेंट कर एटा इंपोज करिवार कारण कोन हमें जानिचे लेजिस्लेचर हमर कोन करछि लॉ मेकर आ लेजिस्लेटिव हेड होचंदी किए ना प्राइम मिनिस्टर होते स्टेट रहले स्टेट चीफ मिनिस्टर जेतेबेले स्टेट चीफ मिनिस्टर कंट्रोल न करि परिबे तुम ऑलरेडी जानिथिबो गवर्नर कोन करंती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर और एजेंट ऑफ द सेंटर गवर्नर कोन हेले एजेंट ऑफ द सेंटर एजेंट जेतेबेले हेले सी कोन करिवे फोर्टनाइटली रिपोर्ट देबे का प्रेसिडेंट को से गोटे दिन तो खाली लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब हो जीवनी ना किछि दिन टाइम नबो से टाइम नेला भीतर सब कोन कले कंसल्टिंग देखा गला जे गवर्नर मध्ये कोन कले अप्रूव करे नेले रीअफर्म करे गले देयर इज नीड ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन द कंसर्न स्टेट्स कंसर्न स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल होइबा दरकार सेहि पई कोन रहिछि धर जे मु बर्तमान कहिबी हम ओडिसा रा मुख्यमंत्री हेले मोहन चरण यदि ओडिसा रा गवर्नर ओडिसा रा लोक होई थाते ताले ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करदे किंतु आउटसाइड रे से आउटसाइड रे हेले इम्पार्शियल रहिबे से बेउंड पार्टी पॉलिटिक्स के काम करिवे तेनु करी जोटा ही से रिपोर्टटा रहइबो प्योर एंड परफेक्ट सो स्टूडेंट्स देखो से तबले रिकमेंडेशन करिवे एंड in respect of these three types of emergencies the president has been given the power to proclaim the emergency and to take appropriate steps for meeting the emergency आ ये emergency की केमिति कोन हम टैकल करिबा जते तुमको मु कहबा कथा तुम जेतेबेले प्रकृति रे तुमको पाठ पढ़ा दिहला तुम पाठ न कल तुम कौन प्रकार पनिशमेंट दिया जाए से पनिशमेंट दबार कारण कौन तुम केमती पाठटा कंप्लीट करियो तमने कहबनी जे मु तो माडा खाइ पाठ पढु सब दिन माडा खाउती सब दिन पाठ पढु तर माडा कहीं तुम दिया जाए माडा दबार मुख्य उद्देश्य कोन तुम के तुम लाइफस्टाइल रे तुम पाठ पढ़े की परिवर्तन मानसिक स्तर रे परिवर्तन आनी तुम केमती पाठ पढिबो इन सिमिलर वे प्रत्येक स्टेट रे जेतेबेले इमरजेंसी प्रोविजन आसी जाए सेतेबेले प्रेसिडेंट कोन करते निजे निजे शासन टाइप हैंडल करंती एवं हाउ दैट कैन बी टैकल्ड हाउ द चैलेंज मस्ट बी फेस्ड when an emergency under article 352 is proclaimed in the sense जोटा का हमें कहू डिक्लेरेशन घोषणा करा जाए when an emergency under article 352 is proclaimed the federal provisions of the constitution get virtually suspended what is the meaning of a federal provision नो अर्थ कोन तमे जानथिबो फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ सेंट्रल एवं स्टेट भितर हमें कोन करबा पावर टाको डिस्ट्रीब्यूट कर तेणु सेंट्रल स्टेट भितर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होउथिला सेतेबेले स्टेट गवर्नमेंट को पावर किछि दिया जिबा टोटली स्टेट गवर्नमेंट रो केते आइटम रहिछि ना 61 आइटम ऊपर से कोन करे डोमिनेट बट डोमिनेट्स करे किंतु एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूनियन गवर्नमेंट सबले प्रिवेंट करे तेणु जो 61 आइटम रहिला सेगुडा सब रिजेक्टेड हे जो सस्पेंडेड हे टोटली कंट्रोल करबो के सेंट्रल गवर्नमेंट कहिथिले इमरजेंसी प्रोविजन समय रे हमर गवर्नर कोन करिवे किछिटा रहबे एग्जीक्यूटिव हेड त एबे रहिचंदी स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर आउ इट इज भाया मीडिया रहउची कोन कि एक्चुअली चैनलाइज होउची टू द टॉप दैट इज एग्जीक्यूटिव हेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेनु गवर्नर कोन करिवे जेतले स्टेट इमरजेंसी बळे तांकर प्रोविजन पर जेते गुडा सब फैसिलिटीज ऑब्जर्व करिवे सेतले चीफ सेक्रेटरी माने रहिवे पुलिस आईजी डिपार्टमेंट रे जे हेड पुलिस डिपार्टमेंट से मध्य रहबे आउ से माने कोन पुलिस को टोटल दिया जो लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करिवा दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द DIG डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल DI हमर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ
director of नहीं district टिके देखि देला टॉप टा कोन रहउची डीजीपी की देखि देला टॉप टा कोन रहउची अब हो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समझिका तेनो डीजीपी जे रहिले से कोन करिवे सुप्रीमो रहबे और हैंडल करिवे टोटली कोन की हमर रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट नेक्स्ट स्टूडेंट्स the union governments can give any direction to each state government regarding the exercise of its executive powers. The union parliament also gets the power to make laws over the subjects of the state list. मुझे state list रे हमर 61 आइटम हैला state list रे 61 आइटम रही छी जो आइटम गुडा ऊपर टोटली कंट्रोल करंती कि ना स्टेट गवर्नमेंट किंतु वर्तमान इमरजेंसी प्रोविजन ने ताको कोन करिवे प्रेसिडेंट so the union parliament also sorry एटी गोटे रही छी हमर देखिनि अपिले मु कहली बदे federal provisions of the constitution case virtually suspended the union government can give any direction to each state government regarding the exercise of its executive power union government वर्तमान direction देबे कोटे कि state government को relating to executive powers the union parliament also gets the power to make laws over the subjects of state list रे जो सब्जेक्ट गुडा रहला ता पर कोन करिवे यूनियन पार्लियामेंट रहइबो सुपरविजन fiscal relations between the union and the states can also be suitably modified हमर जो फिस्कल रिलेशन रही जो डेफिसिट बजट पर जो डेफिसिट रहिला से फाइनेंस को केमिति मेकअप करा जीवो ता बाबत रे पते सेंट्रल स्टेट भितरे किछ नेगोशिएट करा जाय when a constitutional emergency under article 56 is declared in any state the state comes under president rule so the president ka rule under a case then state as that the governor of the state becomes the real executive and the state chief minister gets removed state रा chief minister के रहिबे state chief minister रहिबे नाही governor हेबे ruling head executive head the governor runs the administration of the state on behalf of the president and carries out all the directions of the union government. Union government निखिल जो direction देबे जो भावना गुडा सब देबे जो निर्देशना देबे union government आमे जो कहिले superior होतन डीजीपी ताका संकर रहिला negotiation by access रहिला ताका direction सब गुडा administration चाले ताला देखिबा In case of a financial emergency under Article 360, the President can issue any direction to the states for protecting the financial stability of India. He can order a cut in the salaries and allowances of public servants, including the judges of the Supreme Court and the High Courts. He can order that all money bills, after their passage by the state legislature, are to be essentially submitted to him for his approval. हाँ पिले जेतेबेले आमे देखिबा जो माने सब सैलरी जे पाउछन समस्त सैलरी रिडक्शन हो पिले आमे कहिबा आम मानक भितरे वर्तमान समस्त आमे सैलरी पाउची कोटी 30,000 कोटी 40,000 40,000 50,000 60,000 70,000 जे 70,000 पाउतला सैलरी से बंची छी 30,000 पाउतला से बंची छी काफी होछन तेनु गोटे नॉर्मल से रखा जीवो एवरेज केते भलिया सैलरी दिया जाय तारे जोडै तांका पई कोनसे प्रकार प्रॉब्लम हमनी को माने जो माने रहले एक्जिक्यूटिव बा एडमिनिस्ट्रेटर जो माने सुप्रीम ऑथोरिटी माने रहले तांका पई जदी प्रॉब्लम न हबो सेति पई गोटा एडजॉइनिंग गोटे रीजनेबल गोटे कंसीडरेबल प्राइसेस रहइबो टू गेट अ सैलरी नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वास्ट पावर्स to the president to deal with these three types of emergencies the president exercises his emergency powers also in accordance with the advice of the prime minister and his council जेतेबेले जो काम प्रेसिडेंट करिवे एडवाइस नेबे घर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स